हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? गुड, वेरी गुड. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. This chapter is in class 10, chapter number 8. Okay, so before starting this chapter, I want to tell you about this chapter. Okay, this chapter is very important in real life also. How this chapter is important in real life? First of all, I want to give you the introduction of this chapter. See, first of all, this trigonometry word has derived from the Greek word. From where it is arrived? Derived from the Greek word. Okay, this word trigonometry is made up of three words. First is tri, gon, third is metron. I want to tell you about these three words. Tri means three, gon means sides in mathematics, third is metron which means measure. तो क्या मतलब हुआ यदि हम तीनों वर्ड्स को एक साथ कंबाइंड करें? ट्राइगॉन, मेट्रॉन, ट्रिग्नोमेट्री. ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. So what is the meaning of the trigonometry? Trigonometry basically it is a branch of mathematics which studies the relationship between sides and angles of a triangle. एक मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो एक रिलेशनशिप को डेवलप करती है. किस चीज का रिलेशनशिप बताती है एक ट्राइंगल में? साइड्स का एंगल के साथ, एंगल्स का साइड के साथ, साइड्स का एंगल्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल, there is a tower of 40 meters. Okay, and there is a small pole is there, and I have arranged a wire from this point to from the top of a tower. Okay, and this angle is given 45 degree, and we have to find this. What will be the length of this base? So how you will find out? We will use trigonometry. Why we are using the trigonometry? Because trigonometry says it is the relationship between sides and angles. तो हम on the basis of this angle, and on the basis of given this height, we can find out the base. So here we can use trigonometry. Okay. Now I want to tell you about the right angle triangle, because whole trigonometry is based on a right angle triangle. First of all, what is right angle triangle? I want to tell you. Right angle triangle, a triangle in which only one angle is 90 degree, that is called right angle triangle. किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. This side will be the base, this side is perpendicular, and this is called hypotenuse. So as you know very well, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. This property we have learned in class 7. So you know very well, Pythagoras theorem is hypotenuse square equal to b square plus p square. So whole trigonometry is based on a right angle triangle. Now you understood what is a right angle triangle. What this side is called base, this is called perpendicular, this is hypotenuse. But remember one thing, if this is a 90 degree angle, so these two angles are the acute angle. These two angles are acute angle. Okay,
Please note it down this. Now I want to tell you about trigonometry ratio. अब ये trigonometry ratio क्या होता है? Trigonometry ratio क्या होता है? एक एंगल के बेस पर हम साइड्स के रेशियो लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं trigonometry ratio. Now this trigonometry ratio is of 6 types. तो पहला मैं बताता हूं, सबसे पहला होता है sine of angle A. Sine of angle A. This is called this angle A. Okay. Sine of angle A, you can say sine A, which is P upon H. What is this? P upon H. P means perpendicular and H means hypotenuse. Okay, is it clear? Okay. Now the second ratio is cosine of angle A. You can write cos A, which is B upon H. Okay, this is the second ratio. Now third is tangent of angle A. आप इसको क्या लिख सकते हैं? Tan A. Tan A is perpendicular upon base. Sin A is P upon H, perpendicular upon hypotenuse. Cos A is B upon H, base upon hypotenuse. And tan A perpendicular upon base. तो आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अच्छे से पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, कॉस का क्या रोल है, टेन का क्या रोल है. तो साइन ए पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच, टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आप यहाँ पर ए की जगह पर सी भी लिख सकते हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. ओके, प्लीज नोट इट डाउन दिस. नाउ फोर्थ रेशियो इज कोसिकेंट ऑफ एंगल ए. इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक ए. आप ध्यान रखेंगे कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. कॉसेक इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. इफ साइन ए इज पी अपॉन एच, so this will be h upon p. Okay, now next one is secant. इसको हम लिख सकते हैं sec a, which is reciprocal of cos a. cos a का रेसिप्रोकल, cos a is b upon h, so इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा h upon b. Now next is sixth ratio is cotangent. हम इसको लिख सकते हैं cot a. Cot is the reciprocal of tan. If tan a is perpendicular upon base, so this will be base upon perpendicular. Okay. हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमने साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए निकाला. Similarly, you can find the angle for C also. For example, if I am finding sin C, sin is always P upon H, perpendicular upon hypotenuse. But remember one thing, if you are taking this angle, the side adjacent to this angle is called base. But if you are taking this angle, तो इसका जो base होगा वो कौन सा हो जाएगा? BC हो जाएगा. Is it clear? So perpendicular upon base. So the side opposite to this acute angle is called the perpendicular. So the perpendicular would be AB and hypotenuse is AC. If you are writing sin A P upon H, but see, what is the difference? Understand this difference. Sin C and sin A. What is the difference between sin C and sin A? The difference is of angle. Angle का difference है. यहाँ angle C है और यहाँ पर angle A है. Formula is same. P upon H, P upon H. लेकिन जब आप इस angle की बात कर रहे हैं तो base ये होगा, perpendicular ये होगा, and hypotenuse is the common. But if you are talking about this angle, the side opposite to this angle is called perpendicular, and this will be the base.
So what is the perpendicular now? What is the perpendicular? Perpendicular is now BC and hypotenuse is AC. Clear, beta? Okay, now I am telling you in brief. You can learn very easy. Okay, we can learn this. Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. We can learn this. P means perpendicular, B means base, and PH means hypotenuse. So you can learn Pandit Badri Prasad Har Har Bhole. कैसे लर्न करेंगे? ये आपका साइन होगा, ये होगा आपका कॉस और ये होगा टेन, एंड दिस विल बी कॉसेक, दिस विल बी सेक एंड दिस विल बी कॉट. सो आप आराम से लर्न कर सकते हैं. साइन क्या होता है? P अपॉन H. कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड tan A इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आपको ये भी पता है कि जो कॉसेक होता है वो क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है. इफ साइन इज P अपॉन H तो ये क्या हो जाएगा? H अपॉन P. सेक क्या हो जाएगा? H अपॉन B. एंड कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ओके, so this was the introduction of chapter number 8. In the next video we will cover the exercise number 8.1 of NCERT, and we will do extra question also. Okay, so please watch my next video based on NCERT exercise 6.1.